and the value of internal resistance is also same. And total such cells are m in numbers, m cells. सीरीज में हमने n लिया था, इसमें m कंसिडर कर रहे हैं. Now tell me what will be the value of current here. Suppose I is the current, so we want to write the formula for the value of current. What is the value of EMF that we are going to consider here? Because here we see that they are connected in parallel. So if they are connected in parallel, the value of EMF doesn't add up. Because ये parallel में है, सभी का potential difference सभी के across में same है, so it is E only. इसमें कोई change नहीं होगा. लेकिन what will be the value of equivalent resistances in parallel? मान लो R equivalent हम consider कर लेते हैं, जो parallel में internal resistance है, तो equivalent internal resistance हमें मिल जाएगा, plus external resistance. इन सभी का जो resultant equivalent internal resistance होगा, उसके series में capital R है. That means capital R will be in series with the total internal resistances. Okay, so formula हम यहाँ लिखेंगे जिसमें R equivalent, since they are in parallel, so 1 by R plus 1 by R plus 1 by R कितने times हम लेंगे? How many are there? M numbers are there, so M times. So अगर हम M times consider करते हैं इसके values को, that is we can write here it as M by R. 1 by R equivalent is M by R, which means R equivalent हम reciprocal लेंगे तो it is R by M. So therefore the current will be given by, I will be given by E upon the value of R equivalent is R by M plus capital R. And if we solve it, R plus, हम यहाँ पे LCM में अगर M कंसिडर करें तो वो M ऊपर चला जाएगा, ME, और यहाँ पर MR. मेरे ख्याल से ये सभी समझ रहे होंगे. Is this clear to everyone? देखो, अगर कहीं भी किसी कारण से छोटा डाउट हो ना, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी. Ujjwal and Yogesh, it is clear? Yogesh, it is clear? Okay. So हमें करंट का वैल्यू मिल गया. I is equal to ME by R plus MR. Now इसमें हम दो केस अब कंसिडर करेंगे. First case, this is the value of current that we are getting. मैं इसको एक बार highlight कर देता हूँ. First case में again R is much greater than small r. मतलब internal resistance जो है बहुत छोटा है as compared to the external resistance connected to the circuit. तो अगर ऐसा है तो I का वैल्यू जब हम कंसिडर करेंगे तो I के लिए क्या लिखेंगे? R is much greater, तो स्मॉल r को नेग्लेक्ट किया जाएगा, तो ME by MR, so MM cancels out, it is E by R. हमने एक बार 1 मिनट हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर देख सकते हो, when we have considered external resistance to be much greater than the internal resistance,
the value of current that we are getting is for a single cell only. Current due to a single cell. ठीक है, जबकि केस 2 में R is much less than R. That means capital R neglect हो जाएगा, so it is ME by R, and this is M times the current due to a single cell. Now look at the two cases. Which case is more fruitful? The second one. क्योंकि इतने सारे सेल्स अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें जो करंट चाहिए, दैट इज द करंट शुड बी m number of times the current due to a single cell. लेकिन फर्स्ट केस में when the external resistance is much greater than the internal resistance, उस केस में हमें कोई फायदा ही नहीं है इतने सारे सेल्स का, क्योंकि the current will be obtained, that current will be for a single cell only. तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाते हैं सीरीज और पैरेलल में. सीरीज में हमने देखा था कि कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तभी हमें मल्टीपल टाइम्स में हमें करंट मिलता है. लेकिन जब हम पैरेलल में कंसीडर कर रहे हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी मच स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, so two cases we have discussed. One is the series combination, another is the parallel combination. Now next, third condition. I think up to this it is clear to everyone. I just want the reaction from everyone. Okay. So the third point that we are going to discuss, series में, parallel में हो गया. Now we are considering mixed grouping. Identical cells in mixed grouping. Mixed grouping. So when we consider mixed grouping, cells are connected in series as well as in parallel also. That means सीरीज में तो कनेक्टेड है ही, लेकिन साथ साथ ये पैरेलल में भी कनेक्टेड है. एक लाइन में टोटल n number of cells है, and there are n rows, like m columns and n rows. जैसे हमने पहले कंसीडर किया था, एक लाइन में m नंबर ऑफ सेल्स है, सभी के EMF E आइडेंटिकल एंड सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस R. ठीक है, EMF E and internal resistance R. All the cells are connected to an external resistance given by capital R. And again, we are going to find the